Okay, so just starting through NTC, number theory and cryptography. What's in syllabus? In syllabus, you know whatever it is. First is group, ring, then finite field maybe, and then after that there was arithmetic modulo. After that there was linear congruence, and that I don't think like there's a criteria, but the Euclidean algorithm. This is like sir told, like whatever he told in the class, that's what is going to come in the paper. So yeah, let's just starting through group. You know what is a group, you know properties, you know what is a abelian group, you know like the order of a group is the number of elements in that, and then a set, and then because 90% it's infinite, and maybe it can be finite also. Cube root of unity is also example. This is a 1 minus 1 I minus I is an example. I is iota, right? And multiplicators are not conjugated order the multiplication, that you know. And set of residual integers are something like n minus just like if you have been given integer n, then 0 to n minus 1 is your set of residual integer, right? As such, like I know. And then as far as I know, and then this is something like, remember definition. The properties are like a plus b will always belong to will be converted into b plus d, where this will belong to something like 0 to n minus 1. It's like modern. And a into c will always be, it can be a high number, but it will get converted into the range, right? Okay. And then if a equivalence relation is applied onto a set, it divides it into a disjoint set. Equation या relation like reflexive, symmetric and transitive relation is applied onto a set, then it divides it into set को divide कर देगा, for example, and then into yeah. So disjoint set को जब हम combine करेंगे, we'll get the original set, right? And इसमें एक example n equal to 5 के लिए आपका क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 आपका residue set बनता है, residue set of residual integer, and 0 is actually a representative element of all the elements, all the values which are actually modulo 5 is equal to 0, so which are actually divisible by 5. So 0, 5, minus 5, 10, 15, this kind of so this set is 0 is representing, and over 1 is representing 6, 11 and 16, having the remainder 1, and then 2 is representing and 3 is representing 4. And now if you see closely, if the complete set of n integers, like all possible integers, is being divided into any of these 5 group, and then if we combine all of these 5 group, we will get the complete set of integers, right? As this you can see. And for set of residual integer for Zn is equal to 0 to n minus 1 all the integers, and additive mod this is addition mod n, and yeah, it's an abelian group, right? And Z5 is an area. Now what is ring? If you know the group, what is ring? Ring is something like a algebraic structure containing a set and two different operation, first one and second one, and the set is actually a abelian group with respect to the first operation, and with respect to the second operation is just associative and follows the closure property, right? So yeah, these are the basic things, and there are two binary operation plus and multiply, you can say. So this was the first two property. The third property is it's actually distributive with respect to both the operations, right? Plus and multiply, right? Yeah. And yeah, that's what it is, like commutative group, closed, associative, and then distributive. And some examples are like something n plus into multiply is infinite. Like it's not an why it's not a ring, because actually distributive तो होगा, but abelian group होता है क्या? n plus का abelian group ही नहीं होता, right? क्योंकि group ही नहीं होता, abelian group तो छोड़ो, like because it doesn't satisfy the inverse property, like इसमें 0 present नहीं होता, n natural numbers में होता है. Z plus multiply is a abelian group and it's a ring, right? And r plus multiply is a ring, right? And then m plus multiply is a ring, where m is my matrices, and obviously it has square matrix, because for distributive property to follow over the multiplication operation, it has to be the square matrix, right? A to b is equal to b. Yeah, I think, right? And then even integers are actually a subring of this, and is also a ring, right? Even integers over plus and multiply is a ring, because it's commutative group over plus, and it's associative and closure and follow distributive property over this also, right? Second. And yeah, that's what it is. And the subgroup is something like it's a subring actually. Subring definition would be also same like an algebraic structure which is a group, like A is a group, B is a group, and all elements of B are subset of a subset of A, then B is a subgroup of A. And similarly, if A is a ring, B is a ring, all the elements of B are subset of the B is a subset of A, then B is called a subring, right? So that's what it is. And then after that, subgroup, subring, and the ring is a commutative ring, and important modulo arithmetic, mostly 26.
Commutative ring. What is commutative ring? Like after the ring, now the next thing is commutative ring, and this commutative property holds true. Like just how after the group there was a abelian group, over ring there is a commutative ring, and no such special name for this. But yeah, commutative rings are like only commutative property must hold true. Distributive property holds, but commutative must hold true over the second operation, right? Over the second operation. Let me just see like whether it's a commutative. Yeah, this has to be. R should be commutative group over first operation, not just group but commutative group. Yeah, you know that. And then you know what's commutative ring. After the commutative ring, there is a concept of integral domain. Integral domain is something like commutative ring with our two conditions, which is first existence of an identity element, like identity element, and over the second operation, right? Because over the first operation it's already there because it's commutative group. So like A and B belonging to set R, and then A and A star B is equal to not A star B, but A star E is equal to E star A is equal to A, right? So this has to be identity element, right? Yeah, that's what it is. And then the second property is actually a good one. Like if the second operation applied between the two integers of any numbers, A and B, the A star B, where A and B belonging to R, if it is equal to 0, then it implies either A is 0 or B is 0, right? So that's why it is the same property. And if there's something like a being satisfy these two property as well as the commutative ring property, then we'll call it as an integral domain. And that's what it is. Like E plus multiply is not an integral domain because it's just like I told you. क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन के आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1 एंड इवन नंबर्स में 1 नहीं होता, राइट? सो दैट्स व्हाट इट इज. दैट्स नॉट एन इंटीग्रल डोमेन एंड Z12 इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, राइट? ओके, बिकॉज इट्स एन इवन इंटीजर. और why Z12 is not an integral domain with respect to maybe plus property also not follows, and कम्पिटेटिव ग्रुप है नहीं, एन जेड प्लस तो है, जेड एन प्लस भी है, तो मे बी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होगा, राइट? ए इंटू बी बी इंटू ए होगा, क्लोजर है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो नई प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव नहीं होगा, ए इंटू बी बी इंटू ए. कम्यूटेटिव भी लग रहा है. Then after that the identity element is something like doesn't exist. Identity element भी exist करता है, इसमें 0 है, and a into b is equal to 0 does mean a equal to 0 or b equal to 0. सारी property तो satisfy कर रहे हैं, then why it's not an integral domain? That thing we need to see, like yeah, why Z12 is not an integral domain. Okay, and field, what is field? Field is something like integral domain with some property. Like field is again an extension of the what we have been just going through. We reached till integral domain. Field is a kind of integral domain with some more property. One property is okay. So one property is something like existing of an inverse. So another property is something like only existing of inverse is there, like existing of inverse is there in field, right? And another property was multiplicative inverse, but वो उसके भी आगे आता है, वो आता है हमारे finite field के अंदर. तो बस only inverse वाला point था यहाँ पे कि field में there is an existing of inverse, like a into b is equal to b into a is equal to e, and a b belonging to that. Why I'm saying into? It's the star operation, second operation, right? नाउ हमारा सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में भी लाइक फील्ड तक आते आते सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में भी अब हमारा कम्यूटेटिव ग्रुप बन गया है. लाइक ऐसे हमने धीरे धीरे उसको प्रोग्रेस करा. लाइक पहले वो जब रिंग था तो ऑब्वियसली कम्यूटेटिव से बहुत दूर था, फिर रिंग के बाद वो कम्यूटेटिव रिंग बना, तो उसका एक्चुअली ग्रुप से ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं था, बट या
कम्पिटिटिव ग्रुप में एक प्रॉपर्टी उसने ऐड करी स्टिल, एंड देन उसके बाद वो ग्रुप बना जब आइडेंटिटी एलिमेंट मिला, बट अभी भी ग्रुप नहीं बना एक्चुअली, हाँ एक इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी अब जाके मिली। सो नाउ फाइन फील्ड के अंदर आके वो हमारा दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कम्पिटिटिव बन गया है। इफ़ आई टॉक अबाउट फाइनाइट फील्ड और अ गैलियो फील्ड, अच्छा इससे पहले इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सो जेड प्लस मल्टीप्लाई इज नॉट अ फील्ड बिकॉज मल्टीप्लिकेशन के ओवर वो होता है, आई थिंक प्लस के ऊपर नहीं होता, राइट? क्यों इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता भाई? सिंपल सी बात है, इंटीजर में सेकंड के ऊपर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। 2 का इन्वर्स क्या होता है? 1/2 एग्जिस्ट नहीं करता इंटीजर में, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट रियल नंबर होगा। क्यों रेशनल नंबर होगा, इवन नंबर नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, राइट? नॉन एम्प्टी सेट इज कॉल्ड अ फील्ड इफ ऑल द फॉलोइंग इज इट्स अ कम्यूटेटिव ग्रुप ओवर दिस, इफ इट्स अ कम्यूटेटिव ओवर ग्रुप ओवर दिस, व्हाई f minus 0 is written? I am not getting, like maybe इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता कुछ ऐसा कुछ। नहीं यार ऐसी सही है। ओके मे बी लाइक मैं सीधा एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम की बात करूँ, बिकॉज उससे पहले तुम्हें पता ही है ये अब जस्ट रिवीजन ही है इसका। बस फील्ड के बाद गैलियो फील्ड आना है। यहाँ पे फील्ड के बाद थोड़ा रिंग का रिवीजन करा है कि रिंग में क्या क्या था, उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जोड़ दी तो ऐसा कुछ नहीं, वो रिंग में थी ओनली, एंड देन उसके बाद कम्यूटेटिव रिंग में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जोड़ी थी, फिर इंटीग्रल डोमेन में आइडेंटिटी जोड़ा था और वो एक कंडीशन जोड़ी थी जैसे n to b 0 वाली, एंड देन उसके बाद फील्ड आ गया डायरेक्टली यार इंटीग्रल डोमेन के बाद, राइट? हाँ उसने क्या जोड़ दी, इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी जोड़ दी, राइट? एंड देन मल्टीप्लिकेटर के ऊपर भी इन्वर्स प्रॉपर्टी जोड़ दी, राइट? सो दैट व्हाट इट इज। अब गैलियो फील्ड आती है तो उसमें कहता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, राइट? फर्क क्या हुआ फिर? इन्वर्स वही बात है, नहीं उसमें ये बोला है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट लाइक ए बिलोंगिंग टू एन एग्जिस्ट इफ विल एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, कब एग्जिस्ट करेगा जब ए एंड एन, अच्छा वो थोड़ा सा ना हाँ हाँ हाँ, ए एंड एन आर को प्राइम, लाइक जेड एन की बात आ रही है वो दे आर गैलियो फील्ड में वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट वन स्टफ लाइक set of integer, only set of integer, not like any other set like real number, rational number, सब हट के गैलियो फील्ड is something like for integers, और integers मॉड्यूलो n के लिए zn के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं कि it would be गैलियो फील्ड if the multiplicative inverse of an element a belonging to zn will exist only if like multiplicate कब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा जब तुम्हारा a एंड n होगा को प्राइम, राइट? उसके बाद एक्सटीडियन यूक्लिडियन एल्गोरिथम है, तुम्हें पता ही है इसमें करना क्या है, बेसिकली मॉड वॉड निकालने की काम आती है, राइट? तो n को b में भी लाइक मैंने ऐसा देखा है 11 इनवर्स का मॉड निकालना है, 26 तो उसकी हेल्प कर रही है। अभी देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, b बिलोंगिंग टू zn इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, b बिलोंगिंग टू zn मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब होगा, अगर दोनों का को प्राइम होगा, दोनों राइट या GCD 1 होगा, ऐसे कह लो if this is equal to 1 so s into n plus t into b is equal to 1 and linear congruence है I think, and then ax plus by plus d where GCD of a comma b is equal to 1, right? And then sn plus tb mod n is equal to mod n, then tb mod n होना चाहिए, then tb is equal to 1 mod n होना चाहिए, r is equal to n होना चाहिए, r2 equal to b1 होना चाहिए, t1 equal to 0 होना चाहिए, t2 equal to 1 होना चाहिए, and then तो इसमें जैसे हमें क्या करना था, हमें टी बी मॉड एन निकालना था, ठीक है? एंड 1 मॉड एन टी इंटू बी मॉड एन, मतलब ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन इसने बताया इन्वर्स मॉड्यूलर इन्वर्स फाइंड करने का। बी इन्वर्स इक्वल टू टी, तो हमें टी निकालना है, राइट? हमें T1 निकालना है, राइट? देख लेते हैं हमें निकालना क्या, हमें बोला है कि 11 इन्वर्स का मॉड 26 निकालना है, तो बहुत ही सही है बिल्कुल अर्थमेटिक मॉड्यूलर ऑपरेशन। एंड इसमें हमने एक टेबल बना लेंगे, एल्गोरिथम लिखनी होगी तो वो भी लिख लेंगे, पर एल्गोरिथम हमें पता है R2 जब R1 हमारा N1 से इनिशियलाइज होता है, एंड यहाँ तक क्या है ये थोड़ा सा समझ आया, थोड़ा नहीं आया, लाइक अभी जो भी है, बट द सेकंड एल्गोरिथम मेरे को पूरी अच्छे से आती है, लाइक लेट मी टेल यू, R1 हमारा N1 होता है, R2 हमारा B1 होता है, N1 क्या होता है हमारा जिसके रिस्पेक्ट में मॉड्यूलो कर रहे हैं हम, मॉड n निकाल रहे हैं, B1 वो है जिस नंबर के इन्वर्स का मॉड्यूल निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल 29 इन्वर्स 100 निकाल रहे हैं, तो B1 मेरा हो गया 29 और N1 हो गया मेरा 100, राइट? एंड T1 T2 इज एक्चुअली फिक्स, राइट? T1 इज 0, T2 इज 1, राइट?
T1 is 0, T2 is 1, right? That's what I told. No, too confused. So, but why R2 is greater than 0? अब R2 is actually B1, right? तो यहाँ पे ये लिखा है, लिख लेते हैं N1 B1 T 0, एंड तो हम क्या करेंगे, पहले Q निकालेंगे. Q होगा हमारा R1 R2 क्वोशिएंट आ जाएगा. फिर R1 को क्या करना है हमें पता ही है, लाइक रिमाइंडर निकालने के लिए मॉड्यूलो करना है R1 माइनस Q2. R इज इक्वल टू R, रिमाइंडर इज इक्वल टू R इंटू Q माइनस R1, जो भी है. R इक्वल टू मेरा R2 हो जाएगा मेरा R, एंड दिस R1 विल बिकम R2. अब ये है कि दो नंबर लेंगे, उनका रिमाइंडर निकालेंगे, और जो दूसरा नंबर था उसको पहला नंबर बना देंगे, रिमाइंडर को दूसरा नंबर बना देंगे. सो दैट्स व्हाट इट इज़. लाइक एक रो कॉलम में मैंने लिख दिया 2 नंबर, फिर तीसरा उसका रिमाइंडर निकाला. तो अब जो लास्ट के 2 एलिमेंट है ना, सेकंड नंबर एंड उसका रिमाइंडर, तो उसको लास्ट के 2 कॉलम्स को मैं फर्स्ट के 2 कॉलम्स में डालूंगा नेक्स्ट रो के अंदर. ठीक है, तो ये करेंगे. फिर ये स्टेप हम करते हैं जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता R1 के अंदर. आई थिंक ऐसा कुछ है R2 के अंदर. R2 इज ग्रेटर देन 0, राइट? एंड देन हाँ देन और T हमारा उस हिसाब से चेंज होता रहेगा. T विल बी ऑलवेज बी T1 माइनस Q इंटू T2. और उसके बाद वही है कि जैसे यहाँ पे T लिखा, T1 लिखा, T2 लिखा, T निकाला. ठीक है, उसके बाद T2 और T नेक्स्ट रो में फर्स्ट 2 कॉलम बन जाएंगे, और फिर नई वैल्यू निकलेगी. फिर वो नई वैल्यू मेरा, और वो T2 जो मेरा प्रीवियस T2 होगा नई वैल्यू, वो मेरा कॉलम बन जाएंगे, एंड देन हमारी नई वैल्यू. सो दैट्स व्हाट हाउ इज प्रोसीड, राइट? सो T1 इज इक्वल टू विल बी समथिंग लाइक T2 प्रीवियस वाले का सेकंड एलिमेंट, एंड द T2 विल बी समथिंग लाइक जो नई वैल्यू मेरी आई है वो T में स्टोर करी हुई है. और जब R इक्वल टू मेरा 1 हो जाएगा तो B इनवर्स मेरा T1 के बराबर होगा. तो यही काम हमें करते जाना है. 26 एग्जांपल लिखे, 26 11, तो रिमाइंडर कितना होता है 4. तो अब 11 और 4 की नई रो बनेगी, उसका आंसर क्या होता है 3 रिमाइंडर. फिर 4 3 की रो बनेगी, आंसर रिमाइंडर 1. 3 1 का रिमाइंडर 0, आई थिंक ऐसा होगा. फिर 1 0 की लाइन बनेगी, और इसमें रिमाइंडर निकाला नहीं होता, नहीं होगा शायद, कुछ ऐसा होगा कि मतलब वही बात है ना. व्हेन 3 जब 1 से डिवाइड होगा तो कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा. जब 1 0 से डिवाइड हो नहीं सकता एक्चुअली, तो यहाँ बस तो वो चीज़ है, इसलिए यहाँ पे डैश है. और ऊपर 0 1 से इनिशियलाइज करा था तो -2 आया, फिर 1 और -2 को लिया तो -5 आया. मतलब वो कुछ वो नहीं है रिमाइंडर, वो एक अलग ही ऑपरेशन है. ऑपरेशन इज समथिंग लाइक T1 माइनस Q इंटू T2. नया T ऐसे आ रहा है, T1 माइनस Q इंटू T2, और फिर नया T जो आ रहा है वो नेक्स्ट रो में जा रहा है, और T2 जा रहा है. ठीक है, -2 इंटू, सो फॉर एग्जाम्पल 1 माइनस 2 इंटू -2, दैट्स +4, सो 1 + 4 5. सो दैट्स व्हाट इट इज़. यही है. एक बार और देख लो, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लो, सेम ही चीज़ है. ये 3 रो अलग से चलानी है, वो लास्ट 3 वाली कॉलम अलग से चलाने हैं. और देन इनवर्स, एंड देन यूट्यूब पर डाल दूँगा, एंड इनवर्स एंड देन एडजॉइंट ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ A डिवाइड बाय द व्हाट, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम द मॉड्यूलो ऑफ मैट्रिक्स ए, द यू नो द या जो भी है. एंड दैट्स व्हाट इट इज. ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, बट -1 mod n कैसे फाइंड करेंगे. ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स एडजेसेंसी, ए शुड बी को प्राइम विद n. तो ये थोड़ा सा देख लेंगे लास्ट का पार्ट हमारा मैट्रिक्स वाला. तो अभी सिलेबस पे चलते हैं फटाफट, क्या क्या हमने कवर कर लिया है, लाइक यू नो कि एक बार जरा जल्दी से चलते हैं थोड़ा सा सिलेबस पे. एंड वेयर इज सिलेबस? सिलेबस इज रिटन समथिंग over here, and you city, like you know, shitty. So maybe I can just search for that. What it is? Do you know? It is something like not. It's like NTC. Not November theory. It's number theory. दिस वॉज इट इज. तो ग्रुप हो गया, रिंग हो गया, फील्ड हो गया. फील्ड ही हुआ है, फाइनाइट फील्ड अभी देखा नहीं, लाइक यू नो गैलियो फील्ड में भी फाइनाइट फील्ड है. एंड मॉड्यूलर अरिथमेटिक अगर यही है यूक्लिडियन एल्गोरिथम तो ठीक है. सॉरी. सो दैट्स व्हाट इट इज. लीनियर कॉन्ग्रुएंस अभी देखा नहीं. एफिशिएंट एल्गोरिथम फॉर मॉड्यूलर अरिथमेटिक में भी वही है. आई डोंट नो, लाइक फॉर्मेट तो अभी नहीं हुआ, यूलर क्राइटेरिया नहीं हुआ अभी. सो फॉर्मेट से तो छोड़ दो पक्का. लीनियर कॉन्ग्रुएंस में भी 20 का कुछ पार्ट अगर निकला है, और एफिशिएंट एल्गोरिथम भी आई थिंक नहीं हुआ. सो यही चीज़ है जो है, यही है. तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम में भी ये मॉड्यूलर अरिथमेटिक का दूसरा नाम. एंड नंबर थ्योरी, टेस्टिंग, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सब छोड़ दो. एंड बेसिक क्रिप्टोग्राफी कॉन्सेप्ट हो चुके हैं. सीजर सिफर हो गया, फाइन सिफर हो गया, ऑटो की सिफर हो गया, वेरिएंस सिफर हो गया, हिल सिफर हो गया. दैट्स व्हाट इट इज. प्लेफेयर न्यू आर्ट. सो दैट्स व्हाट इट इज. ये सब आएगा. एंड लाइक बेसिक अगर थ्योरी की बात करें तो कवर है, बट इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस ही करने हैं अब. ओके.